ना हमने जो फितना का वर्ड है उससे नेगेटिव एसोसिएशन जो है हमने एलिमिनेट कर दिया है, बिकॉज द पर्पस अगेन रिमाइंडिंग यू ऑल in myself कि fitna का purpose actually is to become the best version of ourselves and not to break, which is we're going to talk about in this about in the ayah itself. The interpretation of ayah अगर उसको उसी नेगेटिव नज़रिए से रखें कि तो माल और औलाद जो है वो मेरा ज़मीन और फितना है मेरे लिए, तो अगर मुझे फितने से बचना है तो मैंने माल और औलाद नहीं करनी. एंड देन वी हैव एग्जाम्पल ऑफ पीपल हु बिकम so pious and the pious कि वो मलंगी और फिरंगी हो जाते हैं. एंड देन they actually lose themselves and lose themselves in the process, और वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की सर्विस में डेडिकेट कर देते हैं, टू द पॉइंट कि दे थिंक दैट हैविंग अ फैमिली इज़ लाइक यू नो व्हाट डू यू से अ टैबू और समथिंग रियली बैड, और इवन हैविंग मनी. सो देन यू सी मलंगी लोग इन दरगाहों में और इनमें पड़े होते हैं. सो these are example of extremes that people go to as well, and they think it's fine. Why? Because we are serving Allah subhanahu wa ta'ala. But actually in the process what happens, there are cases as well जहाँ पे people committed zina and they committed adultery, they committed child molestation at times as well, astaghfirullah, and then और उसकी इन सब केसेस होने की वजह ये होती है बिकॉज वी डिप्राइव आवरसेल्व्स ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स. को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशंस कि हमने माल को और औलाद को जो है द मीन्स ऑफ फितना तो रखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उन दूसरी जगहों पे माल और औलाद जो है वो देयर आर मीन्स ऑफ ब्यूटिफिकेशन फॉर दिस वर्ल्ड. ज़ीनत तो हयात दुनिया में से रखा है हमने, विच मीन्स हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशनिंग द वर्ड ज़ीनत इन दैट आयत itself actually points out ke these are means of beautification, because zina is something associated with beauty, so it is beautiful, there is nothing wrong with it. But jab wo mera concern, primary concern jab मामलात ban jaye, which we will talk about another extreme in this video, wo mere liye basically that can mean become a means of failing of the trial and tribulation Allah subhanahu wa ta'ala put me through. But having the desire to have them, there is nothing wrong with it. So and basically the point is of this part of as an example is that there is nothing wrong in having the desire to have children and money, but and there is no reason we should deprive ourselves of that. But these are basically our necessities, so we should have them. And इस फितने के चक्कर बचने के लिए कि cause वो फितना है मेरे लिए and I can fail in the trial, it's is depriving myself, and that can take me to extremes. Then the second example of failing the trial, it could be कि certain people who even have the desire लेकिन उनके पास माल और औलाद नहीं, they keep struggling with this throughout their life. Some people don't have money, some people don't have children throughout their lives. But when I know I'm failing in that trial is जब मैं उसके अल्लाह ताला का शुक्र करने के बजाय I actually complain अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मेरे पास औलाद नहीं है. I keep comparing myself to others. मेरे पास कुछ देने को नहीं है, and then in a constant state of depression and ungratefulness throughout my life, and then being poor as well, cause I think this is also a fitna for all of us as a mean and trial and tribulation. And how am I grateful to Allah subhanahu wa ta'ala in all situations? And some people don't have, even though they desire it, they can't have it. But that's also a trial from Allah subhanahu wa ta'ala. And I can become the gold version of myself when I say thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and I keep trying and I keep pushing, making efforts. It certainly may not be कि मैं हो सकता है कि मेरी औलाद ना हो पूरी ज़िंदगी जो है, उसके बाद भी हो सकता है उसके बाद मेरे पास पैसा भी ना हो पूरी एफर्ट्स के बाद भी. Allah subhanahu wa ta'ala needs to see the effort that I put in, and the result is we're gonna see in the afterlife. हो सकता है दुनिया में ना नजर आए. And then the third extreme that happens is on the like opposite end, कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने लोगों को माल भी दिया औलाद भी दिया है, and all they're concerned about is what they do with what they basically forget in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala completely, and all they do is occupy themselves. is उनका primary concern होता है
कि मेरी औलाद और मेरा माल, और मैं उसको अपने माल को मल्टीप्लाई कर सकूं और अपनी औलाद को एजुकेशन दे सकूं, और एजुकेशन तो ओनली लिमिटेड टू द वर्ल्डली बेनिफिट्स, नॉट टू द हेयर आफ्टर बेनिफिट्स. एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, देयर इज़ एक्चुअली हमारी जिम्मेदारी अपनी औलाद को वर्ल्डली एजुकेशन देना, बट ऑल्सो वी हैव टू इक्विप विद नॉलेज ऑफ दीन, क्योंकि वो नॉलेज जो है वो वहीं तक लिमिट रह जाएगी एंड देन विल नॉट गो फॉरवर्ड, एंड इट्स अ काइंड ऑफ ट्रायल ट्रिबुलेशन एज वेल कि वो नॉलेज आगे बढ़ नहीं सकी, तो सदका जारिया बनने के नहीं बन सका, बिकॉज हमारी माल औलाद जो हैं दे पुट इन द सेम आया इटसेल्फ, बिकॉज दे कैन गो बियॉन्ड योर सेल्फ. टॉकिंग अबाउट वेल्थ एज वेल, के वेल्थ का इस्तेमाल जो है अगर इंसान सही से करे तो दैट कैन गो बियॉन्ड देमसेल्व्स एज वेल, by means of charity, by what they give to their children, by what they give to their family, by what we give to our neighbors and immediate family as well. And if it flows in the right way, तो वो मेरे लिए सक्सेस बन सकती है. बट इफ आई एम so occupied with my own self कि मैं, because I have seen people who say like, okay, why do I need Allah subhanahu wa ta'ala? I have enough money, I have children, they're doing good and my family is doing good, and I have a business and all I'm concerned about is कि वो मेरा business कैसे बढ़ सके और पैसा आ सके. So this is another extreme. But if अगर हम इस आयत को सही से समझ सकें कि अल्लाह ताला मेरे लिए एक्चुअली वो टेस्ट हैं थ्रू द मीन्स ऑफ कि मैं उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकूँ ज़िंदगी में, एंड the wealth and the children can go beyond myself, because that means a sadaqah jariyah for me. After I die, I have a legacy and it will go forward beyond just myself and the time I lived in dunya, and I'll be only successful when they fulfill their potential in this wealth, and this and my children go beyond me. Then I'm successful, and then I can attain that state of becoming the goal that Allah subhanahu wa ta'ala wants me to be in this world. So that's the 3 cases that are described in this video. Inshallah, go forward the emotional aspects of it next part. But again, we discuss about the true meaning of fitna, which is to become the goal version of ourselves. Then 2 extremes of not even though desiring money and children but not having them, कि हम उसको confuse कर सके as a means of in a negative way, एज अ मीन ऑफ कि मेरे लिए ये ट्रायल ट्रिबुलेशन का जरिए बनेंगे तो मैं ना करूँ. सो नो, हमें अपने आप को डिप्राइव नहीं करना. देन सेकंड केस वाज वेयर पीपल डू नॉट हैव इवन दो डिजायर्ड कैन नॉट हैव वेल्थ एंड चिल्ड्रन बाय अल्लाह's will, एंड दैट्स आल्सो मीन ऑफ ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन. और उस वक्त मेरा अल्लाह ताला को भरोसा, शुक्र करना, सब्र करना, इट्स मैंडेटरी, एंड देन दैट्स ओनली वे आई कैन अचीव the state of becoming gold myself as well. And then last one was another extreme of being blessed with them, but अपना primary concern उन्हीं को बना लेना, and not utilizing that blessing in building a legacy that goes beyond myself. So these are three cases I discussed. At the end of the day, again, the purpose of that is to become closer to Allah subhanahu wa ta'ala by succeeding in the trial and tribulation, not being stuck with it. And usko trial and tribulation ka purpose again wo to become the best version of myself in this dunya, and then वो उसका रिजल्ट हो सकता है मुझे दुनिया में ना नजर आए, बट आखिरत में when we are present to Allah subhanahu wa ta'ala, हम लोगों को अल्लाह ताला स्पेशल लाइट से नवाजेगा, जिसकी लाइट जो कि लाइट जो कि गोल्ड की वो हमें इस वक्त नहीं नजर आ रही हो सकता, but that light will emerge on the Yawm al-Qiyamah when we will have shining bright faces and our hands, and we will be blessed with Jannah. That's the eventual goal. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to practice on what we heard, and myself as well, because at the end of the day, the reason why I did this video was, alhamdulillah, I was blessed with a baby girl, and I was thinking about family and how family dynamics works, and आज जो मुझे अल्लाह ताला ने bless किया है, how Allah subhanahu wa ta'ala, what he has blessed me with, and how I can use it to the best of my capacity to serve serve Allah subhanahu wa ta'ala and my family, and how I can behave around them so that this goes beyond myself.
And Allah subhanahu wa ta'ala, like I said, Allah it applies to myself first and then goes forward. Allah subhanahu wa ta'ala forgive any shortcoming in my speech, and Allah subhanahu wa ta'ala, the messenger knows best. Assalamu alaikum.